Welcome to another episode of Mimamsa. Today we shall be talking about Sanatana Dharma. You must have heard of this term recently, and more so in the current political context. And today, in this episode, we shall talk about what it means, how does it relate to modern life, and what constitutes Sanatana Dharma as an idea. So, to discuss that, we have Anupam Anand with us, and I am Nikhil. So, firstly, before we jump into the core ideas of Sanatana Dharma and before we jump into how it relates to us in modern life, what does the word Sanatana Dharma mean, and what is that? So, Nikhil, Sanatan Dharma दो शब्दों से बना हुआ है, सनातन और धर्म. सनातन का मतलब बहुत सिंपल होता है, it means eternal, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, right? Dharma is a complex idea, and no, it does not mean religion, right? According to what most people would like to believe at this point of time, that is wrong translation. Rig Veda defines dharma as prithvim dharmam dhritam. So dharma is that which upholds life on earth, right? So it can at best be correlated with the idea of order and law. So Sanatan Dharma essentially becomes the eternal laws or eternal order of this world, right? And so because this world that we live in, the physical world, so to say, is sort of non-constant and it's changing. ये बदलता रहता है, right? माया का भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल वर्ल्ड के लिए. तो वो जो कि चेंज नहीं हो रहा, the metaphysical aspects of this life, उसके अराउंड जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम सनातन धर्म के आइडिया से रिप्रेजेंट करते हैं. So that is broadly the idea of Sanatan Dharma. Okay. So if I am to understand what you said correctly, Sanatan Dharma is some sort of an eternal set of laws or eternal set of rules that applies to all life on earth. And since it is such a broad idea, it is not really related to the nitty-gritties of daily life. It is like a level higher than that. It looks at things at a much more sort of conceptually higher level. Correct. We'll get to that later. But so the question then arises: how has Sanatan Dharma and religion, how have these words become sort of so confused, so interrelated in modern sort of conversation? Yeah. So you need to understand, a lot of modern ideas. In fact, modernity itself, has a lot to do with this one event in 17th century, which is called the Peace of Westphalia. That happened after a long European war. Which culminated into this treaty or Peace of Westphalia. So around that, there were a lot of events that were happening in Europe. One of them was obviously the Protestant revolution that was started by Martin Luther King I, who wanted to reform Christianity. And so he started this movement on Protestantism. And then he gave certain rules to define Protestantism as such. So those rules and doctrines, that used to define Protestantism were sort of given the idea, have given the idea of religion, so to say, right? और उसी के around, Max Weber बोलते हैं कि Protestantism की वजह से ही nation states का निर्माण हुआ. तो जो जिस तरह के nations और boundaries का concept या territories का जो concept जो आज हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे ही आता है again. और in fact, the politically contested idea of secularism is also again from this event and around this concept itself. तो इसीलिए उनको जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, इसका कोई कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो फिर वो एक गलत आप कंपैरिजन कर बैठते हैं. So राजा राम मोहन रॉय ने सॉर्ट ऑफ ये वर्ड यूज किया 19th सेंचुरी में, जब वो थोड़ा वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गए. तो उन्होंने इंडिया में जो रिलीजन का जो उनको सबसे क्लोजेस्ट लगा, उसको उन्होंने डिफाइन करने के लिए हिंदुइज्म टर्म का इस्तेमाल किया पहली बार. और हिंदुइज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड इंदू या इंडस रिवर, राइट? तो इंडस खराब हो करके हिंदू बन गया.
तो वो एक जोग्राफिकल कॉनोटेशन है एट बेस्ट, जो कि डिसाइड बताता है कि जो इंडस रिवर के उस तरफ जो लोग रहते हैं उनको आप हिंदूज बोलते हैं, और वहां से हिंदुइज्म टर्म सॉर्ट ऑफ उभर के आता है. चाइनीज आई थिंक इनफैक्ट टुडे आल्सो कॉल्ड इंडियंस एज हिंदूज, राइट. तो वो आइडिया वहां से, तो इसलिए वो कंपेयर करना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है आई थिंक वहां पे. Yeah. So, okay, that sounds that's actually a pretty nice summarization of what Sanatana Dharma is not and what modern religion is. So that begs the question. You do mention that Sanatana Dharma is sort of an eternal set of rules, right? So that also gives us the conclusion that any eternal set of rules should be open to change, should be open to, if you can put it as conjecture, to debate, to whatnot. As time changes, these rules should be allowed to change. So how does the idea of, say, a set of rules for physical living, is it even encompassed by the idea of Sanatana Dharma, or is that something totally different? So, correct. So, like I mentioned, that dharma is something that upholds life on earth. ठीक है. तो धर्मा तो रेलेवेंट है, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें तो धर्म की बात इंडियन कॉन्वर्सेशन, हाउस होल्ड कॉन्वर्सेशन बहुत ट्रिवियल चीज है कि ये तुम्हारा धर्म है, इसको तुम्हें करना चाहिए वगैरह वगैरह वाली बात है, राइट. राजधर्म की बात करते हैं लोग, तो ये तो बहुत कॉमन टर्म है इंडियन हाउस होल्ड. बट वो क्या चीज है, वो क्या धर्म है जो कि एटर्नल है, जो एटर्नली कांस्टेंट रहता है, वो आइडिया क्या है, उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, राइट. बट वो भी इसका मतलब कुछ ऐसे आइडियाज होंगे, कुछ ऐसे धर्माज होंगे, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होंगे, ऐसे लॉज होंगे जो कि एटर्नली कांस्टेंट नहीं रहते, राइट. तो वो जो ऑर्डर होते हैं, वो जो लॉ, उनको हम सिर्फ और सिर्फ धर्मा शब्द से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. अब मैंने जैसे बताया कि जो सनातन धर्मा है वो, क्योंकि बाय डेफिनेशन, क्योंकि हम बात करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, राइट. लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, वो हमें पता है डिफरेंट फिलोसफर्स जैसे आई थिंक प्लेटो हिमसेल्फ टॉक्ड अबाउट, राइट, दिस वर्ल्ड इज नॉट reality, right. Reality as we know is the shadow of ideas, is what he famously said. तो वो जो आइडिया जो हम यहाँ मतलब जो रियलिटी देख रहे हैं, तो वो एवर चेंजिंग है, वो सच्चाई नहीं है, राइट. तो ये इसके लिए जो लॉ है वो टाइम और स्पेस के हिसाब से चेंज होते रहे. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल धर्मशास्त्र की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पॉपुलर किताब जो आती है वो मनुस्मृति आती है, राइट. चूंकि मनुस्मृति 2000 साल पहले के अराउंड लिखी गई, तो वो उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम की सोसाइटी और उस टाइम के कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट रही होगी शायद, राइट. बट उसको आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न सोसाइटी में नहीं यूज कर सकते. तो इसलिए आपको उस सोसाइटी में द आइडिया ऑफ धर्म को भी आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको उसको रखना पड़ेगा, राइट. तो इसलिए हमारे पास मॉडर्न डे में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक लॉ है जिसको हम फॉलो करते हैं, हम सब एज गुड इंडियन सिटीजंस, दैट इज व्हाट वी डू. तो इसीलिए बहुत सारे लोग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड गिव अंबेडकर द टाइटल ऑफ मॉडर्न मनु, right, because he essentially did what Manu did about say 2000 years back, right. He gave us a set of orders or laws to follow, to live our life according to dharma, so to say, right. So इसीलिए that is the other aspect of the things, right. So unlike, and this is unlike what say ISIS or Taliban, these fundamentalist groups would do, what essentially the recent conflict in Taliban is also, sorry to digress, but the recent conflict in Taliban in Afghanistan shows कि शायद अगर तालिबान वहां पे आएगी तो वो बहुत पुराने लॉज को इन्फोर्स करेगी. जब आप फंडामेंटलिस्ट हो जाते हो तो 7th century 8th century के जो इस्लामिक लॉज हैं आप उनको इन्फोर्स करना चाहोगे यहाँ पे. बट उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी और एक पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए शायद वैलिड था, बट वो अभी नहीं. तो आप उसको वर्बैटिम अभी यूज करना चाहेंगे तो गलत होता है, जैसा कि इंडियन सोसाइटी ने रियलाइज किया और हमने एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया.
So that is the idea. So इसी कॉन्टेक्स्ट में एक लास्ट पॉइंट जो निखिल मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि आपको अगर ये वाला जो आइडिया इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो फॉर एग्जांपल आप चाइनीज सोसाइटी को ले सकते हो. चाइना में अगर आई थिंक सर्वे किया गया था तो उसमें पाया गया था कि 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो एथीस्ट है, राइट. इसमें माओ का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके कल्चर एवोल्यूशन और उसकी वजह से उन्होंने रिलीजन को सप्रेस किया. बट अगर उनसे थोड़ा सा डीपली पूछोगे तो आप फॉलो क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सो आई थिंक इट्स लार्जली अ बेस्ट मिक्सचर ऑफ ताओइज्म एंड बुद्धिज्म. तो दैट इज एसेंशियली अ वे ऑफ लाइफ दैट दे आर लिविंग एंड दैट इज समथिंग दैट दे आर नॉट कॉलिंग इट एज रिलीजन पर से. तो ईस्ट में जो सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट्स जैसे इंडिया और चाइना, तो यहाँ पे वो रिलीजन का आइडिया को आप वेस्ट से ला करके उसको सुपर इम्पोज करना चाहेंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली एक शब्द से कुछ आइडियाज को डिफाइन करना चाहेंगे, तो वो एक गलत चीज हो जाएगी, वो आप नहीं कर पाएंगे. और वही हो रहा है a lot of this. True. Right. Yeah, that sounds up because Supreme Court ने भी कहा था ना कि Hinduism is a way of life. Hinduism is a way of life. So it makes more sense that when you're talking about a religion is not necessarily a way of life. A religion is a set of codified laws, a codified set of rules. Codified rules. So the idea that Hinduism is a way of life essentially means that it is broader than a codified set of rules, which is it is also open to change. It is open to sort of modern. When I say modern, I mean modern at any point in time, modern for that age, modern for that day. To have those ideas and that knowledge and whatever you know then to be superimposed onto your way of life to make a better way of life for that time. So that is essentially, I believe, what Sanatana Dharma also is trying to say, or the idea behind Sanatana Dharma. Yeah, exactly, man. Yes. So that then the idea then is, if you have Sanatana Dharma as this essential way of life. And you spoke about Sanatana Dharma talking about metaphysical aspects of life. Because once you talk about physical aspects, then you come down to rules and laws. But when you're talking about something that's eternal and unchanging, or eternal and sort of eternal law, that can only apply to something that is metaphysical. So, in very brief, Sanatana Dharma, what metaphysical aspects does it talk about? Okay, so briefly 4-5 pointers I'll give कि इसके बारे में आप क्या बात कर सकते हो, राइट. मेटाफिजिकल जब हम बोल रहे हैं, मेटाफिजिकल टर्म आप किसको कॉनोटेट कर रहा है, तो इसमें द इम्पोर्टेंट आइडिया इज ऑब्वियसली ऑफ गॉड. भगवान क्या है, राइट. व्हाट इज आत्मा, सोल क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ मोक्ष एंड और लिबरेशन, राइट, वो क्या है. टाइम कैसे जाता है, स्पेस क्या है, मतलब क्या कोई एक दूसरा प्लेन एग्जिस्ट करता है जहां पे दूसरे लोग रहते हैं, राइट, और वो रहते हैं तो वो कैसा है, वहां पे चीजें कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल, राइट. तो ये है. फिर उसके बाद कि आप अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी कल्चर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ. तो सत्य क्या है, राइट, और सत्य अगर है और वो है तो उसको आप जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, लॉजिक क्या यूज करेंगे, मेथड्स क्या यूज करेंगे उसको जानने के लिए, समझने के लिए. तो उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो हम उस मेटाफिजिकल आइडिया और सनातन धर्म को क्लोजली समझ पाएंगे. तो आई थिंक जब हम एक एक करके वो समझना चाहेंगे तो विल डू इट. तो दैट्स ऑफ कोर्स एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट भगवान है, द आइडिया ऑफ गॉड, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड. That is always a question that has troubled humanity forever almost. So let us get into that then. Let us get into the big questions, like what is God? What does Sanatana Dharma tell us about God? Because I am assuming that since it is such a broad school and such an old school of thought, it probably has a variety of ideas to God, and it has different ideas and different schools of thought as well about who God is or who God isn't. Correct, and that is absolutely right. So I think at this point of time, one needs to sort of get into the idea to understand the tradition of thoughts that were prevailing in India, right? So we are broadly discussing about Sanatana Dharma, but even in terms of answering the metaphysical aspects and the physical aspects, there were different schools of thoughts within this broader framework of the metaphysical aspects of reasoning that we are discussing right now. So usme there were largely 6 astika schools and 4 nastika schools. When I talk about astika means वो schools of thought जो कि वेदों में बिलीव करते थे और या फिर द नॉलेज दैट इज देयर इन वेदास उसको मानते थे कि वो सच है, वो सही है. 4 schools of नास्तिक जो कि वेदास को रिजेक्ट करते थे.
The 6 astika schools are Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, our very own channel Mimamsa, and I think the last one is Vedanta, right? And the 4 Nastika schools are the Charvak schools, which is the materialistic school. Then there is Ajivika school, and the 2 famous religions, Buddhism and Jainism. और किसी ने भी अगर हिस्ट्री बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अराउंड बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म इवॉल्व करता है, राइट, अराउंड अशोका's टाइम, राइट, देयर एंड देयर. तो ये डिफरेंट स्कूल्स हैं और सबके अपने अपने विजन्स हैं अबाउट हाउ टू अटेन ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज गॉड आल्सो, राइट. तो अब मैं इनको ब्रॉडली अगर देखूं ऊपर से कि क्या है ये आइडिया, तो भगवान का जो आइडिया है उसको मैं 2 लेवल पे रखता हूँ. 2 लेवल में मतलब एक, वन इज द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर डेटी, राइट, and the other is the idea of a superhuman being, or what Nietzsche called Übermensch, or Übermensch. I'm not good with German. So ये जो 2 levels of thought है. तो अगर हम बात करें एक क्रिएटर डेटी, तो क्रिएटर डेटी में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि मैंने अज्यूम भी कर लिया कि क्रिएटर डेटी है एक्स, ठीक है. द लॉजिकल क्वेश्चन टू दैट आर्ग्यूमेंट इज कि फिर एक्स को किसने बनाया, तो तुम बोलोगे ए, तो फिर ए को किसने बनाया, राइट. सो इट इज एन आइटरेटिव लूप, सॉर्ट ऑफ नेवर एंडिंग इनफाइनाइट लूप, यू नो. तो इसका कोई आंसर नहीं. तो इसीलिए आई थिंक कार्ल सेगन और उसका फेमस सीरीज है कॉस्मोस करके, आई थिंक इट्स वेरी गुड सीरीज दैट वाज aired in 70s I think. तो उसमें कार्ल सेगन यूज करते हैं जैनिज्म की यू नो 1-2 लाइंस, उसमें वो बताते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेटिंग ऑन द आइडिया ऑफ क्रिएटर डेटी बिकॉज यू कैन नॉट by logic prove or disprove that whether or not creator deity exists. तो उस पर डिबेट करना जो है वो फालतू है. तो ये एक कंसेंसस हम लार्जली बना सकते हैं लॉजिकली कि भाई ये डिबेट इज फ्यूटाइल अभी, तो वो हम नहीं करते, ठीक है, तो वो नहीं करते. बट द लार्जर कंसेंसस पॉइंट अक्रॉस ऑल दी स्कूल्स ऑफ थॉट इज अबाउट द आइडिया ऑफ सुपर ह्यूमंस, द आइडिया ऑफ gods with ability, people with abilities, right? So that is something that exists across religions largely. Yeah. Buddhism is probably an exception जहाँ पे वो initially वो gods को नहीं मानते हैं, but then फिर महायाना आता है तो उसमें कुछ आप वो चीजें कर लेते हैं. So the idea of having gods among human beings, gods among men, to use a popular quote, is it's quite smart because that essentially also avoids the whole debate about when was this, or not when, like who was the creator of this whole place. To essentially say that we will not debate something that is not knowable is a pretty smart way to sort of look at that question altogether. So coming down to this idea of having gods among human beings, so this means that there is a scope to have multiple gods. So what is commonly sort of in popular culture known as polytheism, there is a scope for having multiple gods, because you can have multiple human beings who live a perfect life, multiple human beings who live a life worth being recognized as a god, right? Correct. So, correct. So that can exist. Yeah. That can exist. So that can exist, and that is where you find in India a lot of gods being born into the system, so to say, and that is where I also want to introduce this idea. When I say the idea of God, a lot of people will get confused to say that if that God is a superhuman, so to say, then we are not superhumans, right, by definition, and then there is a hierarchy, so to say, right? So that person is a super being and we are not. But then Sanatana Dharma also cleverly goes around this concept also and says that everyone is a god. The idea of aham brahmasmi, right? मैं भी ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, ठीक है, मैं ही ब्रह्म, right? So all the individuals are essentially equally powerful, equally superhuman beings, are equally capable of being superhuman beings, so to say. राइट. तो हम सभी, कोई, मैं, तुम और जो कोई सुन रहा है यहाँ पे, सभी कोई एक अपने अंदर उस डिवाइन एंटिटी को लेकर के बैठा हुआ है,
राइट। बस हमें पता नहीं है या उसको रियलाइज कराने का हमारे पास कोई तरीका अभी हमें समझ नहीं आया। तो हम सब वो सुपर ह्यूमन, सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल तक पहुंच सकते हैं। हम सभी ब्रह्म का एक पार्ट बन सकते हैं, और हम हैं भी, मतलब तो अब वही करना है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। सो इसीलिए जो भी इंसान पृथ्वी पे आता है, अर्थ पे आता है, और एक अनपर्टर्ब्ड तरीके से जो भी पृथ्वी में दुख और सुख है उसको झेलता है, तो उसको हम भगवान कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट द लाइफ ऑन अर्थ इज वेरी टफ। इनफैक्ट बुद्धिज्म की प्राइम नोशंस में से एक है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुख एंड वी नीड टू फाइंड अ वे टू एड्रेस दिस दुख, राइट। तो अब उसको जो भी अच्छे से हैंडल कर पाता है, जो कि इन सारे दुखों के बावजूद अपने आप को संभाल के रख सकता है, एक सेम तरीके से जिंदगी जी सकता है, उसको हम भगवान कह देते हैं। जैसे कि राम के जीवन में बहुत सारे दुख आए, राइट। जैसे कि उनको 14 वर्ष का वनवास भेज दिया गया, सीता माँ उनसे अलग हो गई, फिर जब उनके साथ वापस आई तो भी अयोध्या में जो लोग थे उन्होंने सीता माँ को स्वीकार नहीं किया, तो उनको फिर जाना पड़ा आई थिंक वाल्मीकि जी के पास। तो राम जी ने त्याग किया बहुत सारा, राइट। और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज के साथ सैक्रिफाइस नहीं किया। उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए उनको भगवान का दर्जा मिल गया। फिर उसके बाद कृष्ण का भी नाम आता है, बुद्धा को भी भगवान का दर्जा मिल जाता है। तो ये सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग थे जिन्होंने इन स्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज दे लेड अ लाइफ वर्थ एम्युलेटिंग, जो कि हम सब कोई लोग देख करके सीख सकते हैं। और ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। आप गोरक्षनाथ का एग्जाम्पल ले लें, जहां से हमारे यूपी के सीएम आते हैं, गोरक्षनाथ मंदिर के वो महंत हैं। तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में गोरक्षनाथ जी आते हैं। कबीर पंथ करके भी एक कम्युनिटी है अमंग पीपल इन यूपी, तो वो कबीर को पूछते हैं। तो ऐसे 15th 16th सेंचुरी में गुरु नानक जी आ जाते हैं। फिर महाराष्ट्र में निम्बर्क करके एक सेंट है, राइट, जिनको पूजा जाता है। असम में जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई की है, वहां पे शंकर देव जी हैं, जो कि उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ऐसे सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज वाले लोग हर सेंचुरी में, हर एरा में आते रहे हैं, और उनको दर्जा मिलता गया, राइट। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जांपल ले सकते हैं गांधी, जिसको लोगों ने महात्मा का दर्जा दे दिया, महान आत्मा का दर्जा दे दिया, राइट। गांधी के लिए एक आध टेम्पल्स भी आए थे इंडिया में डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे उनको वर्शिप भी किया जाता है। तो इसीलिए इंडिया में the emphasis on individuality is a lot more than what West emphasize on individual, because कि हम तो infinite potential of human being में believe करते हैं, right? West में individuality logic तक ही सीमित है, हमारे में individuality जो है वो infinite potential to become even God himself तक है। तो इसीलिए human capabilities को जितना दर्जा यहाँ मिलता है, I think वो कहीं नहीं मिल सकता। Okay, that's actually quite a nice it's a nice way to think about it, because there is like people who are listening to this episode might jump out and say, okay, I am God, but that is essentially a very nice way to think about it, to think about the fact that every human being has this infinite potential that they can fulfill if they want to. They might not if they don't want, but they can fulfill if they want to. That's an extremely enlightening thought to have. So now that we've done the sort of the big G, the big question of God and the big question of Brahma, we'll look at the other concept of time, because metaphysical aspects mein time bhi aata hai, because what is time? What is time? When did time start? Because these are all questions again. These are all questions which not only sound nice when when you have nothing to do and you're lying down in your bed, but these are questions that humanity has actually thought about for millennia, and humanity does not have an answer. So I am looking at, I don't know about humanity in general, but Sanatana Dharma has a lot of answers. Exactly, that is my question. So that is essentially, like, humanity does not have an answer that it agrees upon, right? So humanity does not have an answer to it. So in that sense, I'm looking at you to essentially tell us what Sanatana Dharma thinks about time. Or does it have any notions or ideas about what time is and how it starts? Obviously, that is very, very crucial. Physics is very important to understand even the metaphysical aspect, right? So space and time are two very, very important theories.
and in a lot of ways, as Einstein pointed out, that space and time is a continuum and we need to look at this idea in an interconnected way. तो समय का जो आइडिया है सनातन धर्म में वो सर्कुलर टाइम का आइडिया, या फिर मतलब वन दैट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड. यू नो द फेमस डायलॉग कि जो भी हो रहा है ये अनंत काल से होता चला आ रहा है और ये अनंत काल तक होता चला जाएगा. इसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, राइट? सो this is against the Western idea, which sort of sees that there is a beginning to time and there is an end to time, and therefore a lot needs to be done in this time, right? So, वो एक different idea है altogether, and this is a circular idea of time. So, you know, there's a beautiful story. I don't know if it's there in the Valmiki version of the Ramayana or not, but it is essentially when Yam wanted to take Ram with him. You know, to the heavens. तो वो जब आना चाहते हैं यहाँ पे तो उनको हनुमान जी से बहुत डर लगता है कि भाई हनुमान जी को कैसे पार करेंगे, हनुमान जी आएंगे तो कुछ कर वर देंगे मुझे, राइट? दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए वो कहीं ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं राम जी को, भाई हनुमान जी को आप थोड़ा सा साइड में हटाओ तभी मैं आपको लेके जा सकता हूँ. तो हनुमान जी को हटाने के लिए राम जी क्या करते हैं कि जमीन में एक छोटी सी दरार करते हैं और उसमें अपनी एक अंगूठी रहती है उसको गिरा देते हैं. ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई है, प्लीज लेते आओ. तो अब हनुमान यू नो रामायण वगैरह में देखा होगा कि वो साइज अपनी जो है बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते. तो वो छोटे हो गए और वो नीचे अंडरग्राउंड चले गए आराम से. ठीक है, तो वहां जाते हैं, वो अंगूठी ढूंढते हैं, उनको मिल ही नहीं रही थी. तो वहां पे वसुकी रहते. वसुकी इज द सर्पेंट दैट इज शिवाज neck, right? So this is the king of all the serpents. तो वसुकी मिलते, वसुकी से पूछते हैं कि भाई क्या आपने अंगूठी देखी है क्या? तो वसुकी बोलते हैं यार अंगूठी का तो पता नहीं, बगल में एक पहाड़ है वहां जाके चले जाओ, देख लो शायद अंगूठी मिल जाए. तो हनुमान पहाड़ की तरफ जाते हैं. तो वहां पे देखते हैं कि एक अंगूठी नहीं है, वहां पे एक पहाड़ है अंगूठी, राइट? तो इट ऑल क्लिक्स हनुमान कि भाई ये तो मुझे बार बार राम जी जो है वो बेवकूफ बनाते हैं, वो बार बार ये कर रहे हैं कि अपनी अंगूठी निकालते हैं और वो इस छेद से नीचे गिराते हैं और मुझे भेज देते हैं चले जाओ, और वो उधर ऊपर यम के साथ चले जाते, बाहर चले जाते हैं. तो ये essentially it's a point कि everything that has happened is happening again and will happen over and over again. So that is a circular notion of time, you know, that we talk about, right? Yeah. So yeah, that's a very interesting story. But then that also, you know, the counterpart to time is always the idea of space, because you know the famous idea that space time is a continuum, right? It's all one. So this is also a metaphysical aspect that you mentioned. So just like Sanatana Dharma says, time is circular and there isn't sort of a start and end point to time. So I'm assuming that the answer to space would also be something that does not have a start and an end, right? Exactly. Correct. It's an infinite plane, right? So the continuum is infinite, but there is also an idea of having multiple different planes, so to say. And this is to say that, you know, there are different places or there are different space-time continuums that exist, right? So, you know, for example, if you talk about Buddhism. So Buddhism initially had a very limited scope of time, wherein it said that wrongly or whatever for reasons, the initial aspects of Buddhism is called Hinayana, which is a sort of a derogatory term, but let's just stick to it for the time being. So Hinayana says कि Buddha was a normal human being. तो बुद्धा जो है जब वो पैदा हुए वहां से उनकी जो जर्नी है वो चालू होती है और फिर वो अच्छा काम करते हैं, and then, you know, we all need to emulate and go and so forth. But same time जातक stories, you know, जातक कथाएं जो फेमस है, तो वो पॉपुलर कंसेप्शन में आने लगी. तो जातक ने बताया कि भाई यू नो पिछले जन्म में ऐसे स्टोरीज, तो मिथिकल स्टोरीज कि भाई पिछले जन्म में ये ऐसे थे, उसके पिछले जन्म में बुद्धा ऐसे थे. तो इसीलिए अब इस आइडिया को एनकैप्सुलेट करने के लिए, जो कि लार्जर स्ट्रीम ऑफ सनातन धर्म में था, ऑफ अ लार्जर प्लेनर आइडिया, राइट, कि जो टाइम है जो वो एसेंशियली यू नो एक्सटेंड्स इन्फिनिटली, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके महायाना का
कंसेप्ट आता है, wherein it says कि बुद्धा जो है वो अभी अशोकन टाइम में अभी नहीं पैदा हुए, सॉर्ट ऑफ पहली बार, वो पहले भी थे, राइट? और वो पहले दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे थे मोक्ष अचीव करने की. And then he is here now to finally go away for the last time, and then there will be other people who will help other people get achieve mokshas, and then they will go to, so next Buddha, for example, is called Amitabh. He will come and then he will uplift everyone. So on and so forth. So this is the theory. So similarly, India maybe this is the infinite planar time story, and then there is also different levels of planes, so to say. That this is the levels where, like we talked about, normal human who have not realized their potential live, and the other plane where their potential sort of they will live. And the speed of time in both the planes will be different. Right, and this is a popular story in I think Mahabharata, wherein one woman, who wants a good bride, whose father wants a good bride, goes directly to Brahmaji and wants him to tell him कि किससे शादी करनी चाहिए मेरी बेटी की, बहुत ही केपेबल है एवरीथिंग. तो ब्रह्मा जी सेज कि ब्रह्मा जी थोड़ा बिजी रहते हैं, तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर कि ठीक है ब्रह्मा जी बिजी है तो जब ब्रह्मा जी थोड़ा सा आधे घंटे बाद टाइप्स ऐसे फ्री होते हैं तो पूछते हैं कि भैया मेरे को बताओ कि किससे शादी करनी है, मैं जाके शादी करा दूं अपनी बेटी की. तो ब्रह्मा जी ऐसे लगते हैं बिकॉज ही सेज कि जब तक तुम आधे घंटे यहाँ थे तो पृथ्वी पे तो कितने युग गुजर गए, और जो तुम्हारे दिमाग में केपेबल ग्रूम्स थे वो सब तो मर गए. ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम? तो सो अगेन इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन एंड कि ग्रेविटी जब आती है तो उसकी वजह से टाइम स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन the space, right? So that is the Einstein famous idea. Interstellar में I think ये आया था ना, right? Interstellar में I think this idea has been discussed. तो वो time dilation concept भी यहाँ पे sort of दिखता है हमें कि वो change हो सकता है. तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई नहीं, जाओ वहाँ पे अभी बलराम है और बलराम का युग चल रहा है, तो अभी बलराम शादी कर लो, तो हो जाती है. फिर उनकी शादी जो है बलराम से हो जाती है, right? So that is the idea. True. So yeah, so that is actually quite interesting. The idea that like space and time is eternal and continuous, and there is a multiplanar space. There are different levels to space, almost where time moves at a different speed at each level of space. Different space. So I will still avoid, before going to the final topic of moksha, I would still first let us talk about the thing that actually needs to achieve moksha. Right? What needs to achieve moksha? The soul. Like what does sort of what does Sanatana Dharma talk about, and what does it say about the soul? Because you did mention in our discussion about God, in our discussion about space, in our discussion about the jatakas and time, that the whole idea somehow ends up in the fact that people who live a sort of a better life, a good life. Good is a very small term to accommodate what the idea says, but you get what I mean. So like people who live an ideal life, so as to say, or even a life that is worth being recognized as good, somehow achieve moksha. But the part of them that achieves moksha is probably their soul. So what does Sanatana Dharma talk about the soul? What does it have to say about the soul or the atma? So since we have agreed on this fact that this world is eternally changing and it is not constant, right? So the constant aspect of the body or constant aspect of you as an individual would count in this metaphysical world, right? And that is soul. So soul, again, is a very, very complicated concept. It is difficult to understand it. I can only go as far as what Rig Ved goes. Rig Ved helps us understand soul via a story of two birds. So it says that there are two birds sitting on a tree. तो दो पक्षी हैं. एक जो पक्षी है वो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी उस पक्षी जो कि फल खा रहा है उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, right? So this bird जो कि फल खा रहा है, that is your body. The other bird जो पक्षी फल खा रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, that is your soul, right? So soul is an observer of your body and your interactions with this physical world. तो ये observe करने के लिए आया है, right?
And the purpose of this life and the truth that Sanatana Dharma essentially wants you to understand is to understand the soul via your body and mind, and get an idea of what the soul is, what are its attributes, what are its features. Because as we had already discussed, the attributes, the features of souls are that it is actually a super being. It is part of the larger Brahma. It is Aham Brahmasmi. So when you realize through this contemplation कि तुम खुद भगवान हो, उस दिन या उस समय तुम्हारा लिबरेशन हो जाएगा. Okay, that's a wonderful way to sort of think about life as a whole. To when you achieve the realization that you are nothing less than God yourself, that is when you sort of achieve freedom from life. Is an excellent idea. So, let us sort of let us get into some of the final aspects of Sanatana Dharma. I personally would like to ask you this: what do you think is sort of the the defining, not really the defining feature? What do you think is the best part about Sanatana Dharma? क्योंकि ये बहुत expansive idea है ना, मतलब there is it encompasses multiple. I mean, it is a metaphysical idea, so it encompasses multiple streams. It talks about the idea of God. It talks about the idea of time. It talks about the idea of space, and it manages to bring all of this together into some sort of a digestible, semi-digestible at least, idea that everybody is a part of God themselves. Time and space are continuous, and the way to sort of achieve freedom from life, or sort of moksha as people might call it, is to realize that to almost fulfill your own potential. That realize that you're God, and escape the sufferings of life, as one might put it. So I want to know your opinion on this. So, like, what appeals to you about Sanatana Dharma? I mean, of course, the easiest answer is to say the whole thing appeals to me, but I'm pretty sure you might have like one or two favorite ideas from Sanatana Dharma which you feel appeal to you. What are they? I think the idea that that there is not a single authority on Sanatana Dharma itself is what makes this idea the most beautiful one. For example, like we talked about the 10 schools, 6 astik who believe in the Vedas, 4 who do not believe in the Vedas, right? So it is not to say that even Vedas are 100% correct, right? Krishna, I think, mentions that in a shloka in Gita, that I think the crux of that shloka is that if you know me and if you understand me, then you don't need Vedas. In a sense, you are saying that if you know yourself and the divine potential that you have, you don't need to know the Vedas now, right? Because you're already above that thing, right? So in a sense, what you are saying that there is no authority, and in fact, so much so that even God is not an authority. The superhumans, so to say, who have lived, we question Krishna a lot, we question Rama a lot, and in fact, in modern days, I think one of the famous quotes is by Tilak, who says that if God were to recognize untouchability, I would not recognize him as God, right? So it is the ability to stick your head out and say that I don't accept any other person, perhaps apart from my own wisdom, my own sensibilities, my own knowledge. At the end of the day, there might be certain guiding lights, but at the end, it is me who is the supreme boss. It is me who is the Brahma himself. And I think that is the greatest aspect of Sanatana. Excellent. Yeah, I mean, just so that the listeners don't realize how beautiful this is, to say that you are capable of everything, but you're also your wisdom is good enough, and you're wise enough to essentially put forth your own opinions, put forth your own ideas, and there is nothing that can essentially tell you that they are an authority over you or your life. Right. That's a very beautiful idea to consider, and that is something that if I had something that I wanted people to take away from this, I would believe that is something that people should really take away from this discussion with you. So the last thing I would like to maybe
ask you, and let us end. I would like to end with this: is Correct. that so we look at all of this, right? We look at religions, we look at castes, we look at cultures, we look at schools of thought, we look at India as a whole, we look at South Asia as a whole. What are we? So, would you say that Sanatana Dharma is something that everybody lives as a part of their life? Would you say that everybody living here, living in India, or would you not only living in India? Would you say everybody who follows? I mean, everybody living in India essentially. Are they all people who follow Sanatana Dharma, or would you say that they are adherents to Sanatana Dharma? Or would you say that Sanatana Dharma is something that is restricted to people who follow the notion of? I mean, I know you do not agree that Hinduism is a religion, and I agree with you. Hinduism is a way of life, but for the lack of a better word, should we say that only people who follow the Hinduism way of life, or the Hindu way of life, which might include Buddhists and Jains in a wider interpretation, are only those people Sanatanis, or do you think everybody who lives in this area, in the area around the Indus, are they all Sanatanis? So there is a geographical connotation attached to the word Hinduism. There is no doubt about it. But Sanatan Dharma is an idea about the metaphysical aspects and those people, and it should not be from any restriction to any religions. I think that is what your point was. It should not be restricted to a particular set of religion in the modern sense, because when the idea of Sanatana Dharma was conceived, religion was not existent, right, so to say, as we know today, right? तो जो भी इन broader ideas को बिलीव करते हैं, इन broader ideas में विश्वास रखते हैं, वो सभी सनातनी है मेरे हिसाब से. और ये जो आइडिया है और कि हम किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी ऊपर नहीं है, और हम खुद ही सबसे पावरफुल बीइंग है, राइट? जो भी इस आइडिया में बिलीव करता है, कोई एक सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स या रूल से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कहीं भी, वो सारे लोग, और जो भी हैं इंडिया में, बाहर में, या ज्योग्राफी के बाहर है, कहीं भी, वो सारे के सारे सनातनी. मैं तो सनातनी. Excellent. That's an excellent way to conclude the podcast. That's an excellent idea that you are all Sanatanis if you are willing to question everything, and that is that's a very nice model to even live life generally, right? You need to question everything, never take anything for granted. But with that, I would like to thank you for coming on to this episode, telling us about Sanatana Dharma. This was extremely enlightening. And to all our listeners, I would like to ask them, if you've liked what you've seen here, please like, subscribe, share, and please let us know what you would like to hear in the future episodes, because we are always on the lookout for ideas, and we will take ideas as and when you want us to take them. And with that, thank you. Thank you.